Good evening and welcome back to HMR Waterfront Presents Game on Hair, bringing you the post-match from all the matches we've just seen in the ICC Men's T20 World Cup. And what a specky we were just treated to. The Proteas, they only know one way to win. It's a nail-biter. It pretty much comes down to the last ball. And once again, for the sixth time in a row in this T20 World Cup, they were victorious. But how impressive today it was against the defending champions, England. What a match we just saw in the Caribbean. Explosive action once again, and what a way to end their campaign. The Proteas rather continue their campaign as they hurtle towards hopefully a semi-final performance in the T20 World Cup. Their chances are looking fantastic now. They've won 2 from 2 in their Super 8 encounter. Unpacking all the action that we've just seen, of course, is my beautiful co-host Rohan Nadeem, alongside our expert panel in Yunus Khan and Mohammed Hafiz. First and foremost, gentlemen, I mean, what is it about South Africa taking things down to the wire, but they haven't choked once, 6 from 6 times, they get the job done. What did you make of what we just saw, Hafiz? Well, I think they followed the process. If you go the whole tournament they played, they every time, you know, won at a very crucial stages of the game. So I think this game is also there's no difference in that, because what they did in this tournament, they're winning those crucial moments which they used to fail in the past. So I think this time they must have been working on their nerves, how they can control and how they can, you know, deliver at the right time. So at the moment, I think the way they are playing, they look like unstoppable force, and every player is basically ready for that occasion. So they are delivering, especially some of the Nokia and also Rabada. They're doing a fantastic job for them. I know Quinton de Kock obviously batted well, but at certain stage I think England were cruising, and that 17th, 18th over bowled by Rabada, then Jensen, and then obviously Nokia, not giving 14 runs away. I think it's a special effort. Yeah, they close out the innings absolutely beautifully. Nerves of steel. That therapist bill, it's worth every penny. And of course, as the South African captain was also saying at the end of the match, reflecting on their journey so far in this World Cup, Aiden Markram also said that he knows they haven't had a complete game yet. They haven't won a match in the complete sense of it. लेकिन different situations में different players ने perform किया उनके लिए, और by now they are so battle hardened now for those difficult games that are coming ahead, क्योंकि जितने crucial moments पे उन्होंने comebacks किए हुए हैं match after match and against a variety of opponents. Yunus, क्या लगता है साउथ अफ्रीका आगे जाते हुए क्या टेक अवे लेके जाएगा, और एक बार फिर they are reflecting on the fact कि कुछ performances हुई, but again not a completely convincing win from them. मुझे तो लग रहा है ये ट्रॉफी लेते हुए जा रहे हैं इस दफ़ा, जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं. देखिए, पास्ट में जैसे हमने बार बात कर रहे हैं, वो आते हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन स्मूथली जाती है और हार के चले जाते हैं. इस तरह इस दफ़ा कुछ भी नहीं है. और जो मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि शायद अंडर 5 जो है ना रन वो जीत रहे हैं, वो मैं थोड़ा सा मैंने मिस्टेक करके अंडर 7 रन मुझे कहना चाहिए कि इसी तरह होना है. अमेजिंग, स्टिल क्लोज, अमेजिंग है कि इस तरह का अप एंड डाउन, और ये एक अच्छी टीम की निशानी है. देखिए, हम बार बात कर रहे हैं कि चौकर्स हैं और साथ में चौक कर जाते हैं किसी तरह. इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा उनके. वो आते हैं गेम में स्मूथली जा रहे होते हैं, सडनली ब्रेक लगती है और गेम जो है वो अपोजिट चला जाता है. और हम बार एक बात कर रहे हैं कि एक ओवर 17th ओवर में 21 रन का होना, गेम शिफ्ट हो गया है इंग्लैंड की तरफ. नेक्स्ट ओवर आते हैं, रबाडा करते हैं, 3 से 4 रन देते हैं और गेम वापस आ जाता है. देखिए, यही इस T20 का एक चार्म है, एक जो है ना, एक मज़ेदार वो एलिमेंट है. हाँ, एक्साइटमेंट है. मैं कहूँगा मज़ेदार से एक एलिमेंट है कि एक गेम से आप या तो आगे चले जाते हो या पीछे आ जाते हो. तो मेरे ख्याल से देखिए ये अच्छी बात है. लेकिन ये कि ये साउथ अफ्रीका की टीम, जैसे हम, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो इसी तरह आगे प्रोग्रेस करें, और जब वो सेमीफाइनल में आएँ, ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए. एक आधा मैच उनको और अच्छा खेलना है और अब ऑलमोस्ट वो वहाँ पहुँच गए, तो ये अच्छा है उनके लिए. और जब वो जाएंगे बिग्स 2 मैचों में, सेमीफाइनल और फाइनल्स में, मुझे लगता है उनके नर्व्स और मजबूत होंगे और वो जो मिस्टेक बार पास में करते रहेंगे इस दफा होने. Nerves of steel for South Africa, and that team, all the players are now ready to take on any pressure, any kind of pressure, because back to back such close games, and they do prepare you for the kind of pressure that they are known to underperform in, and this will really probably help them going forward in the competition. So I cannot wait to see what these close margins will unleash further in this South African side. It's almost like they don't know how to do it easy. They were absolutely
going along so well, and then, you know, things just slipped back when that partnership of Livingston and Harry Brook was really starting to take some note. But, you know, in the end, again, that bowling unit, that really impressive bowling unit, they banded together, they used their experience, they got the job done. Let's remind ourselves exactly of how they managed to do that with the match summary now. And in the end, a great toss to lose for South Africa, England winning and electing to bowl first. They sent the Proteas in, and de Kock got off to an absolute screamer. He brutalised them in the power play. Another back-to-back 50 for him, back-to-back player of the match with his 65 of 38 balls. Him and David Miller, 43 of 28. It looked like they were batting in completely different circumstances there today. They made absolute mincemeat of the English bowlers, it has to be said. Hendricks never really got started on the wicket again today. Bit of a scratchy 19 of 25 for him. Tristan Stubbs, 12 not out for him off just 11 balls. Jofra Archer, 3 for 40, was expensive with the ball. Adil Rashid, though, probably the pick of the bowlers, 1 for 20 there. The way that he brought things back when South Africa got off to such a wonderful flyer after the power play was truly commendable. And Monu Ali, ever consistent, 1 for 25. But in reply, the chase. Well, Harry Brook was the standout from afar. He very nearly got the job done until he was so unlucky to fall in that final over to an absolutely brilliant catch by the captain, Aiden Markram, in the outfield. Running back, I'm sure we'll relive that one in a little while. And that partnership with Liam Livingstone, it really almost took the game away from England. They resurrected that run chase where South Africa were absolutely cruising, it had to be said, before that partnership took place. Maharaj, though, 2 for 25, the pick of the spinners. Rabada, 2 for 32. Yes, a little expensive in parts, but when it counted, him and Nortje, along with Marco Jansen, pulled it back and got South Africa the all-important win by 7 runs. Which brings us to the Group 2 in the Super 8. And South Africa, they've played 2, they've won 2. 4 important big points on that table with a positive net run rate. And England, well, yes, they're sitting in second on 2 points, but they're going to need to make sure that they win their last couple of matches to make sure they edge out either the USA or the West Indies for that all-important second position. South Africa looking very comfortable in that top spot. Will they be one of the semi-finalists? Remains to be seen, Roha, but they're definitely staking their claim and giving themselves the best opportunity to progress. They're surely cruising towards that semi-final spot, and they know it. You know, these close margins have really brought out the best in them as a team. But Hafiz, let's talk about Quinton de Kock. We were talking about those tricky New York conditions and how it was getting difficult for the batters to get those runs. खास तौर पे top order जिस पे South Africa इतना rely करते हैं. Now back-to-back games. He's finding his form. He went fishing, and I think all of the South Africans need to go fishing, because if that's the result it gets you, just a day off doing what you love to do. How great was he once again with the bat and making sure कि वो power play का जो एक crucial phase, and not only in that, but then to continue that momentum going forward. How amazing was he today? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो इनिंग्स है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है. शानदार इनिंग्स. अंडर प्रेशर, वी ऑल नो कि थोड़ा सा मॉइस्चर की बात की जा रही थी, उसको उन्होंने नलीफाई किया. जिस तरीके से उन्होंने उनके ऊपर काउंटर अटैक किए, अपनी एग्रेसिव शॉट ऑन किए, इनकी इनिंग्स देखने का तो बहुत ही मज़ा आया. इससे भी ज़्यादा मज़ा मुझे आया इनकी स्टेटमेंट में, जब ये पोस्ट अपना जो मैन ऑफ द मैच ले रहे थे पोस्ट मैच का, उसमें इन्होंने कुछ लोगों को टैग करने की कोशिश की कि जो इस पिच के लिए बड़ी डिफरेंट स्टेटमेंट्स लेके आए हुए थे कि ये बेल्टर है, दिस एंड दैट है, एंड ही वाज सेइंग कि वो रात के मैचेस से और यहाँ दिन की जो कंडीशन है उसको कंसिडर नहीं किया गया. सो आई थिंक पर्सनली आई फेल्ट ही वाज नॉट हैप्पी ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन अर्लियर विदाउट नोइंग द फैक्ट कि यार ये डे गेम है, पिच डिफरेंट आएगा. एंड आई थिंक ही अडेप्टेड अकॉर्डिंगली. बहुत शानदार इनिंग्स खेली. और ये बहुत कम ऐसे मैच होते हैं जिसमें आप पहले 6 ओवर में मैच जीत जाते हैं. तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द इनिंग्स बाय हिम जहाँ पे पहले 6 ओवर में ही इन्होंने फर्स्ट 6 ओवर में बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म दे दिया था. हालांकि मुझे लगता है अगर मैं ओवरऑल जाऊं तो साउथ अफ्रीका वाज अंडर पार रन्स फॉर श्योर. बाय द स्टार्ट दे ही गिवन देम, आई थिंक दे वर अंडर पार फॉर श्योर. लेकिन वो जो होता ना कि सम टाइम चैंपियन बनने की वो जो प्रोसेस है ना साउथ अफ्रीका उसकी तरफ चल रही है. दे विनिंग द नेल बाइटर्स, मोस्ट ऑफ द नेल बाइटर्स दे विनिंग दोज मोमेंट्स. सो आई थिंक एज ए टीम मस्ट हैव बीन इन अ ग्रेट कॉन्फिडेंस कि इनके हर एक प्लेयर डिफरेंट टफ सिचुएशन में, एक होता है आसान सिचुएशन के अंदर पक्की पकाई मिल गई आपने खा ली, यहाँ पे भी देखें कि वो मेहनत करके मैच जीत रहे हैं.
और उनके डिफरेंट प्लेयर्स रिएक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेयर्स स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही शानदार सफ़र है। मुझे नहीं लगता कि इनको यहाँ पे धचका लगना चाहिए, लेकिन जहाँ तक भी ये जाएंगे इनको ये जर्नी याद रहेगी। बिल्कुल, द जर्नी ऑफ कोर्स, एंड जिस तरह आप बात करते हैं सरफेस की एंड हाउ डिफरेंटली इट प्लेज इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, एंड वही बात है कि हर मौके पे डिफरेंट प्लेयर्स ने यूनस इनके लिए परफॉर्म किया है। क्विंटन डी कॉक जो हम अक्रॉस फॉर्मेट्स उनको देख रहे हैं, रन्स पे रन्स उन्होंने किए हैं साउथ अफ्रीका के लिए, वो भी पहले 3 मैचेस में स्ट्रगल कर रहे थे। एंड जब आपका स्टार प्लेयर व्हेन ही सडनली फाइंड्स हिज फॉर्म बैक, कितना कॉन्फिडेंस मिलता है बाकी बैटर्स को इन दैट ऑर्डर, बिकॉज बाद में एडन मार्क्रम ने भी क्रेडिट दिया क्विंटन डी कॉक को, जॉस बटलर ने भी यही कहा कि ही वाज जस्ट टू स्ट्रॉन्ग फॉर अस एंड वी कुड नॉट मैच हिज इंटेंट। देखिए हाँ, हम उनकी अगर पहले फेज़ में बैटिंग देख लें तो वहाँ उनके शॉट्स ज़रूर आते थे, 1-2 ओवर में आते थे, 2-3-4 शॉट्स होते थे, चौके छक्के होते थे, लेकिन जो हम बात कर रहे थे वो अपने आप को एक टाइम नहीं दे रहे थे। लेकिन टाइम क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि वो जिस फॉर्मेट में खेलते हैं और जिस फेज़ में खेलते हैं उनको ऐसा खेलना है, क्योंकि उनका अब ये नहीं हो सकता, जैसे बार बार हम यहाँ बात भी कर रहे होते हैं कि जब पावर प्ले होता है तो उसमें बाजू का ये नहीं हो सकता कि आप जाएंगे और 20-25 बॉलें खेलेंगे और उसके बाद आप सोचेंगे कि शायद मैं बाद में कर लूँगा। ऐसा नहीं है, आपको टीम के लिए खेलना होता है और सिचुएशन के हिसाब से खेलना होता है। लेकिन उस वक्त टफ़ कंडीशन थी और जैसे वो टफ़ कंडीशन से वापस आए उन्होंने अपने गेम को बैक किया है, 2 मैचों में उन्होंने बैक किया और अब इस पोजीशन पे खड़े हैं कि ऑलमोस्ट वो जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करके। इनकी अच्छी बात है, लेकिन मैं इनकी साउथ अफ्रीका की मैं एक अच्छी बात करूँगा, फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त लग रही है और उसके बाद उनकी कैप्टनसी, वो बहुत प्रोएक्टिव कैप्टन है। ठीक है, बैट्समैन का एक ओवर आया जो कि वो थोड़ा सा नर्वस लगे, उनको 21 रन हुए और शायद हमें लगा कि शायद वो वापस आ जाए। इसी तरह पिछले मैच में भी ये हुआ, लेकिन उनके पास जो मैं बॉलिंग में ऑप्शंस देखूं तो काफ़ी ऑप्शंस हैं उनके पास। अच्छा, मेरा एक आप दोनों से एक सवाल है क्विंटन डी कॉक की बैटिंग के ऊपर कि वी हैव सीन हिम बैट अक्रॉस फॉर्मेट्स एंड यू नो रन्स ऑन रन्स। व्हाट डिफरेंस हैव यू ऑब्जर्व्ड in his batting and how has he changed gears from that 50 over to 20 overs? क्या observation आपकी है कि how, because we've seen him accelerate at different paces in that 50 over World Cup. We saw what he did. रोहा, इंटरनेशनल क्रिकेट डिमांड ही ये करती है how you evolve with the game. At the moment इंटरनेशनल क्रिकेट हम हैं कौन? As a cricketer who we are entertainer. If we cannot entertain the crowd, we cannot entertain the audience, there's no point we should be there. So I think his evolution, the way he evolving himself with the game, you can be less consistent but more impactful. He going on that theory. Sometime हमें नजर आता है कि क्विंटन डी कॉक हर मैच में स्कोर नहीं करते, लेकिन ये वो शीदा है जिस दिन चलता है मैच जितवा देता है। हमारा वो शीदा चलता नहीं है, वो चलता है। तो इसलिए आप अपनी कंसिस्टेंसी इस फॉर्मेट में या अब इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर वो कम भी है ना तो चल जाएगी, लेकिन यू नीड टू बी मोर इम्पैक्टफुल. सो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज हु इज बेसिकली व्हेनेवर ही प्लेज हिज ओन वे ही विन द गेम फॉर यू. सो आई थिंक दिस इज़ द वे टू मूव फॉरवर्ड इन इंटरनेशनल क्रिकेट, कि आपकी जो एबिलिटी है टू पुट मोर इम्पैक्ट ऑन द गेम इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर कंसिस्टेंसी. सेलेक्ट कर लूं फिर? आप तो मैडम सेलेक्टर हैं, आप जो मर्जी कर लें. लेकिन डाटा ये कहता है कि आपको वो सारे पॉइंट्स बता रहा हूं, बाकी फैसला आपने खुद करना है. लेकिन डाटा कह रहा था कि इंग्लैंड जो है वो चेस करेगा और वो चेस कर लेगा, तो आज तो नहीं हुआ चेस. तो मेरा ख्याल से डाटा तो ये कहता था, डाटा तो ये कहता है, लेकिन देखिए ये इन्फॉर्मेशन होती है, आपको ओवर इन्फॉर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए. आपको बस वही वाली बात है कि आपको, जैसे हम बार बार बात करेंगे, जो पिच की कंडीशन है, जो ग्राउंड की कंडीशन है, उसके मुताबिक आप फैसला करें, चाहे वो बैट फर्स्ट है चाहे वो बॉल फर्स्ट है. Right, but toss once again not being that much of consequence, Erin, as we have seen in this World Cup so far. Yeah, no consequence at all. But you know, one thing that QDK did say in his player at the match presentation was the fact that he did appreciate the experience that CPL had afforded him in these different conditions. Yeah. It was a day game. We've seen a lot of night games here, and he thought a lot of batters made the mistake of looking at that to be the blueprint on how to succeed. And he knew, being a day game in these conditions, through his time through the CPL, getting to play in these conditions, that wasn't going to be the case. So back-to-back 50s, back-to-back player of the matches, good signs for the Proteas. You just feel like when QDK gets you off to a flyer, that you're going to be set in good stead. So, you know, from one batter, we now move to the other man who stepped up numerous times during this World Cup campaign for the Proteas, David Miller.
Killer Miller, he did the job in the middle order once again. They lost a couple of wickets. They were starting to lose that intention of their scoring rate through those middle overs. But, you know, once again, 43 of 28 runs, Eunice. Yeah. He was so important to make sure that they even got to that defendable total of 163. Yeah, they were 100 for 3 at that time, and then he makes sure that he just stay there and take some single, that's cross pattern shots, reverse sweeps, and then he just go for the kill till the end. And they were, I think they were like 20 runs short at that time, but on the when you're chasing something like 160 and you know that you have the power of good bowling, fast bowling, and then you have a good spinner. So I think it was a much needed performance from him, and the senior pro should be play like that. So I think and they knows that what kind of total they need for defending. So they will know that 160, 170 will be par in this pitch. Yeah, he absolutely helped resurrect the innings. It was looking like the English bowlers were all on top of the Proteas before he came to the fore and was able to power them to that 163 runs, which did really feel like it was under par, didn't it, Hafiz, in terms of the conditions. What did England do so well? And then when do you think they took their foot off the gas, particularly in that first innings with the ball? Well, I think they were obviously a good innings from de Kock. They couldn't make any best plan for that. But once he got out, obviously Adil Rashid was an impactful bowler today. He controlled the game. He given all the right momentum. I told you earlier. You did. Madam Selector, yaad rakhe. नाम लिख लिया दूसरा भी मैंने. So Adil Rashid is basically the one of the guy who basically controlled that, you know, a brutal kind of innings, a brutal kind of a start given by de Kock, and then obviously Moeen Ali also bowled some good overs. But you know, that time I believe, because the damage already has been done, because on this track if de Kock couldn't play that way, they could have been 140 something. But I think overall the way England bowled on this track after that smacking kind of innings from de Kock, I think they also must be happy from where they restricted South Africa. But I'm completely lost the way, like, you know, I don't understand how they approach toward this target. When you know that in the middle of the phase, the pitch, like the ball is not coming onto the bat that good. So why you didn't try that hard in the first 6 overs? So basically in the first 6 overs, today is the game when they lost the whole momentum. So first 6 overs, they scored more than 60 runs and they scored, I think, 41 or 40 runs. So that's where those 20 runs couldn't they recover in the middle over. Yeah, it and seemed to special get their informed batters was not there. So and then they heavily rely on Salt and Josh Butler. So when they get out at that time, and when you know what was the problem at that time, when you are chasing things, that's how you get, you know, behind the target. Yeah, they did complain that the wicket got a little bit slower and slower as the ball got a bit older and the innings progressed. But yeah, in the end, it was that blistering power play led from the front by Quinton de Kock that was the difference, and some absolutely sensational fielding, it has to be said, in the chase by South Africa. Still plenty more to unpack here on HMR Waterfront Presents Game on Hair. Stick with us, we're off to a very short break, but plenty more on just the other side. जी वेलकम बैक टू HMR वाटरफ्रंट प्रेजेंट्स गेम ऑन है. हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड की. अनदर क्लोज इनकाउंटर इन विच साउथ अफ्रीका कंटिन्यू देयर अनबीटन स्ट्रीक इन दिस वर्ल्ड कप, एंड दे विल बी प्रीटी हैप्पी विद हाउ their batters came out to play, their bowlers joined the party, and all in all it was a convincing win, but not as convincing as they might like. As the captain also said, hum break se pehle we were trying to break down the game and we were trying to look back at some of the key performances, and of course Quinton de Kock, what an innings he played with the bat once again. So a great unbeaten streak South Africa are enjoying right now, but let's talk about that bowling a little bit more, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में इनका जो ये एक फॉर्मूला लगा है, एक तो उनकी स्क्वाड की सिलेक्शन ओवरऑल यूनिस हैज बीन सो स्पॉट ऑन. दे हैव really amazing bench strength because they didn't play Shamsi in this match. They did play him against Nepal also, and we saw what a spell he bowled in that match, 4 wickets. But अगर हम इस मैच की बात करें,
picking, I mean, of course, resting Shamsi, going forward with Maharaj and then the seamers and how they all collectively came together. आप क्या कहेंगे इस अटैक के बारे में, क्योंकि इनका अगला जो कॉन्टेस्ट है वो वेस्ट इंडीज के साथ है, which is again going to be a pretty challenging one. But bowling की अगर हम बात करें, how did the bowlers outplay the English batters today? देखिए साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की मैं एफर्ट की बात करूँ और प्लानिंग की बात करूँ, देखिए नॉर्मली बैट्समैन जो है वो नया बॉल करते हैं, आज हमें वो नज़र नहीं आए। आज उन्होंने बड़ा एक प्लान बना के रहे, उनको पता था कि आगे से बैटर्स ऐसे हैं, एक्सपीरियंस बैटर्स हैं, तो ये ना हो कि बैट्समैन ठीक है बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनका खासा ये है कि वो उनके पास वेरिएशन है, सीम अप और बहुत अच्छी जगह लेंथ और लाइन पे बॉल करते हैं, लेकिन आज उन्होंने रबादा से बॉल किया और उनको पता था कि अगर हम किसी तरह ये देखें उन्होंने एंसन के साथ और रबादा ने ये उनको पता है कि ये फॉर्म में है और ये अगर यहाँ से 1-2 आउट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश टीम जो है वो हैविली इन दोनों बैटर पे वो रिलाई कर रही थी, ख़ास तौर पे फिलिप सॉल्ट की, उन्होंने उनको आउट किया अच्छी फील्डिंग के ज़रिए और फिर जब जैसे जैसे उनको विकेट्स मिलती गई और स्पिनर का जो रोल है वो वहाँ पे नज़र आया। तो मेरे ख्याल से देखें इस वक्त वो प्लान से कर रहे हैं और उनकी बॉलिंग का पता है कि उनके पास जिस तरह नोकिया की फॉर्म लगी हुई है, रबाडा ने पिछले मैच में भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, उनका जो 19 ओवर था वहाँ पे उन्होंने गेम के उनके लिए और सिक्योर किया और आज भी जिस तरह वो 18th ओवर उन्होंने किया है और फील्डिंग आपके सामने है उनकी। तो मेरे ख्याल से देखें इस वक्त टीम साउथ अफ्रीका जो है वो सिर्फ ये नहीं कर रही कि चाहे बैटिंग कर रहे हैं चाहे बॉलिंग, लेकिन उनकी प्लानिंग भी हमें नज़र आ रही है, उनकी फील्डिंग एफर्ट भी नज़र आ रही है और जिस तरह उनकी रोटेशन है आज वो मुझे बहुत सरप्राइज़ किया उन्होंने कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैट्समैन आएंगे वो शायद आगे से वो जो है ना सीम अप बॉलिंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने मेक श्योर किया कि उनके जो ख़ास तौर पर रबाडा हैं वो आएँ और 1-2 भी अगर आउट करते हैं तो उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। तो मेरे ख्याल से प्लान बहुत ज़बरदस्त है इनका। But that 17th over where Bartman went for 21 runs, then followed by Rabada's over, again very expensive, 18 runs of that over. Then Jansen followed it up with, he tried to pull it back a little bit, but by then damage had been done and England were pretty much back in the game at that point. They did lose grip of the game with the ball for a little bit there. At the moment, if I am in a dressing room of England, I must be scratching my head. I will not go towards anything, but must be thinking that what went wrong, and that is surely because the game was in their hand, like 18 balls, 25 runs, and they basically lost the game from there, and that should have been won quite easily that time because the two set batters were playing. Harry Brook was playing fantastic innings along with Livingston was playing well, but sudden those couple of wickets and also good bowling from Rabada that time, I think given all the right momentum back to South Africa. But as an England fan, I feel like they should win the game, but they have to blame themselves because they won the toss, they choose to field first, and then at one stage they were cruising to win this game, which we felt like Harry Brook and Livingston gonna win the game for England. But I would say like the special moment once again won by South Africa, and this is the whole journey we've seen throughout in this tournament. They are winning the most difficult situations of the game quite often, and that's something special from South African. That 18th over that Rabada bowled only went for 4 runs and he got the big wicket. It really was the turning point. But if you go back just a few overs before, the turning point was on the English foot because Rabada with the ball once again got absolutely taken downtown by Livingston and then Harry Brook. And then he continued that momentum and all of a sudden that run rate, which was looking at 12s and over, came down to a really gettable target. So, let's relive Harry Brook's innings because it truly was almost the difference today for England. 53 off 37. That over really sparked something within him, and that partnership with Liam Livingstone looked like it was almost going to take the game away. What did you like about the intent that Brook brought? Well, we all know how quality player he is, and as I said in the pre-match when obviously we were discussing about the team sheet. So I was saying like this guy with the talent he has, still he has to prove himself at this level in this format. And today was the time, and he batted brilliantly. He must be annoyed from himself why not to finish that game. Because I was thinking if this guy can play 6 ball of the last over of Nokia, he's going to win the game. But on the first ball, it's a special catch by Adam Akram. But still, I think all effort from Brook was fantastic because he took the game at that stage when obviously England was struggling, and then he brought everything into their momentum. Like momentum was into England's
side at that time when obviously they couldn't make it. Because if Brooks stayed in, you'd have to think that England were in the box office to get the job done. That catch by Aiden Markram in the outfield was absolutely brilliant. Yunus, how hard is that to do? They were winning after the 17th over. They were winning. I think they could finish the game like 1 hour, you know, before. But in the end, you know, that 1 hour of Rabada, we know that one crucial hour and Rabada make again for his team. So I think these kind of small, you know, points and, you know, small movement, you have to win. Especially when you're chasing. So I think they have to learn, and the way they play, especially Brooks and Livingston, their partnership was very fantastic, but they couldn't finish for game for their team. Yeah. And in our build-up show, we also talked about the threat of the English bowling, and there were times in this game जहाँ पे उनका जो game plan था वो उनके हाथ से निकलता हुआ नजर जरूर आया, but जोफ्रा आर्चर के ऊपर बहुत बात हुई है because उन्होंने एक तवील अरसा बाहर गुजारा है outside of international cricket, making that recovery उस rehab से गुजर के, and finally इतना बस था. We all know what he can do in World Cups. आज उनका जो spell था, it didn't start off in the most ideal way. 21 runs in his first over, but then that comeback, and Butler, the way that he utilized Archer today, he came back in, and then in the 20th over we all saw double wicket over. That was Hafiz. What will you say on the threat of Jofra Archer? Is he living up to the hype that was created around his comeback? I still believe he needs a little bit more time to bring the best out of him, but at the moment, whatever the job captain is asking from him, he is delivering accordingly. I think after the first over to come back, it tells you the strong nerves of a cricketer. So I think as a bowler he recovered very well. He came back really strongly, and he bowled according to the situation of the game. I think after first over, when de Kock was playing very well and he smacked him all over the park, and then obviously he came back, he took, you know, the second over when he's been brought back by the captain, he took de Kock's wicket, and then obviously bowling in the last over was very well. So I think as a team they must be happy as a bowling unit to restrict South Africa under par, but they must not be happy from the batting display, because I feel this total should have been chased by the talent they have within themselves, and they are not all out, they are only 6 wickets down. So how come you can lose a game without even if you've been bowled out by a team, a fan can take it, but if you are not bowled out by a team and you're not scoring 160 on this track, they must be disappointed. यूनुस, आपके क्या थॉट्स हैं आर्चर के स्पेल पे ओवरऑल जो इनका बॉलिंग अटैक है? बिकॉज डू यू थिंक ये बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं ऑन आदिल रशीद फॉर दैट इम्पैक्ट? बिकॉज आर्चर वाज एक्सपेंसिव इन दैट फर्स्ट ओवर इनिशियली, लेकिन उन्होंने जो कमबैक किया बॉल के साथ, कमेंडेबल फॉर हिम. तभी आप टॉप के प्लेयर बनते हो, और जब आप कमबैक करते हैं. इसी तरह टीम साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया आफ्टर 17 ओवर, उन्होंने आके अपने सीनियर प्लेयर ने आके कमबैक किया. इसी तरह आर्चर की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से देखें काफ़ी अरसे बाद आ रहे हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे हैं. उसकी वजह ये है कि हमने देखा है कि इस वर्ल्ड कप में जो आपके मेन फास्ट बॉलर होते हैं और जिनके पास स्पेस होता है, वेरिएशन है और एक्सपीरियंस है, उनको ये मिडल फेज़ में जब आप यूज़ कर रहे हो, नॉर्मली टीमें क्या करती हैं कि उनको आप समझते हो कि शायद लोडेड है विद स्पिनर्स, लेकिन जब इस तरह के बॉलर्स हों, नोकिया की पेस के बॉलर हों, उनकी तरह के पेस के बॉलर हों और फिर वेरिएशन हो, और जिस तरह उन्होंने जब दोबारा आए हैं तो स्लो वन पे रिलाई किया, उन्होंने बहुत जल्द ये समझ लिया कि यहाँ अगर हम पेस देंगे तो रन्स होंगे, और ये एग्जैक्टली हुआ. अगर मैं बैट्समैन की बात करूँ तो वो जो 17 ओवर आ रहे थे उनकी थोड़ी सी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आके तेज़ बॉल कर रहे थे और एक डायमेंशन की बॉल कर रहे थे कि यॉर्कर्स के लिए जा रहे थे, और 4-5 उनके जो है वो फुल टॉस हो गई. तो मेरे ख्याल से ये आप जब 5 फुल टॉस हो गए, उसमें एक आधा और छक्का लग जाता तो ये तो रना बॉल हो जाता. तो मेरे ख्याल से देखें ये आप लर्न करते हो, लेकिन टीम इंग्लैंड को अब आगे क्या करना है, वही वाली बात है कि देखिए ठीक है आप चेज में अच्छे होंगे, लेकिन आपने कंडीशन के हिसाब से फैसला करना है. अगर कंडीशन आपके पास अच्छी है, आपके पास पावर है, आपके पास बॉलिंग में भी ऐसी वैरायटी है, तो आपके पास स्पिनर्स भी मौजूद हैं और आपके पास ऐसे स्पिनर मौजूद हैं जो कि रेगुलर बॉल्स करते हैं. आप अगर लिविंगस्टन की बात करें तो वो भी लेग ब्रेक बॉल करते हैं, मोइन अली की बात करें तो वो है, तो फिर आपको वरी क्या है? तो मेरे ख्याल से देखिए आपको जो कंडीशन सामने है उसके हिसाब से फैसला करना है. अगर कंडीशन बैटिंग के लिए है तो ठीक है आप बैट करें,
और जाके ज़रूरी कि क्यों है कि आप 160 चेस करो, आप क्यों नहीं 200 प्लस करो और अगली टीम को जो है ना अंडर प्रेशर करो, और उस टीम को जो कि ऑलरेडी अंडर प्रेशर, उनकी बैटिंग इतनी क्लिक नहीं की हुई है। लास्ट मैच में भी यही हुआ, जब क्विंटन डी कॉक को वो फ्री जोन मिला, पहले बैटिंग की तो उन्होंने रन्स कर दिए, आज भी एग्जैक्टली यही हुआ। और फिर सडनली जब आपकी तरफ मोमेंटम आता है, दो के मुझे हमें लगता है कि 20 रन शॉर्ट थे, 20 से 25 रन, लेकिन जब मोमेंटम आपकी तरफ हो जाता है और जब रन्स आप चेस कर रहे हो और आपके जो इनफॉर्म बैटर्स हैं आउट तो होना है उनको, तो अगर वो आपको आउट हो गए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो। मैं यहाँ पे एडम मार्करम की कैप्टनसी को बहुत अच्छा उनको पूरे मार्क्स दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक ओवर खुद किया और उनको समहाउ पता था कि शायद बार्टमैन जो है एक ओवर कहीं आगे पीछे, उन्होंने एक ओवर में 4 रन ही दिए, लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया कि अगर कहीं अंडर प्रेशर हो तो वहां पे उनके पास एक कुशन जरूर हो। And I would like to raise the similar kind of captaincy, like not similar but the other captain who was basically Josh Butler. Like today when he saw Adil is doing very good job for a team, why he did not try Livingston? And he was the one bowler who can bring, because of his wrist, he can bring 1 or 2 wicket at that particular stage, but he's not been given even a 1 over. To me, I think that was a mistrick by a captain, because he given that ball to Sam Curran that time. He was very pretty expensive, nearly 9.7 was the economy. I think that time in the middle over, when the ball was turning, Adil was doing a great job. There should be 1 or 2 over, they should be bowled by Livingston. You never know, he could give you some 1 or 2 wickets that time. And you're right about that. I mean, England will be scratching their heads Absolutely. at what happened in this game. Defending champions once again out of answers. मुझे लगता है उनके पास डाटा वाला बंदा नहीं था। या शायद सिर्फ डेटा वाला बंदा था, एप्लीकेशन वाले बंदे नहीं थे। But another good point to ponder on for the English players, you know, they will take a look at how they couldn't chase 164 on this wicket. A lot to talk about from this game, but this was our post-show time to wrap up this segment, move on, and time for a very short break here on HMR Waterfront Presents Game On Air. But when we come back, we will start our little preview, little build-up on what's to come next on the other side. Don't go anywhere. A very warm welcome back to HMR Waterfront Presents Game On Air. We've just seen an epic win to the Proteas all the way over in the Caribbean against the defending champions England. But of course, the T20 World Cup rolls on as the Super 8s get underway, and of course we have another match to look forward to at 5:30 a.m. which is only in about 5 hours time, so this is going to be a big one. It's do or die for both of these two sides. We're back in Bridgetown, Barbados, and it's the two host nations, the West Indies and the US of A. I don't think anyone would have thought that both these sides would be contesting it in the Super 8s, but here we are, Roha, and they absolutely both need a win if they're going to stay in contention for a semi-final position. I think the USA have to go through this so much pressure, because the last couple of games that they have played, you know, except for the match that was abandoned against Ireland, they will be looking to make that comeback, because they've just aroused so many expectations from their team, and nobody thought they would be making it to the Super 8s. And I think that's the biggest success story of this World Cup. Seeing the USA team taking on these mighty teams and then coming out on top. And some of the players have just been so exciting to follow, not just in this World Cup, but of course if you see their journeys from before the World Cup. So I think this could be, we could be in for a surprise, Erin. Let's just not draw any conclusions yet. It is in Barbados, so we will be interested to see what the conditions will be like, and of course which team comes out on top. Absolutely, and now that we know that England have suffered a loss, South Africa are riding high. If they could win, if the West Indies could win against the US of A, equal England in terms of wins, Hafiz, it makes for a really interesting contest for probably that second position in the semi-finals. What do you make of the pool now? Well, this pool is very interesting because from where I can see it, US obviously they came in this Super 8 with a lot of expectation from the fans, because they did it very well at the group stage. But you asking too much from them if they beat these giants of the game. So I think still, you know, in the game of cricket, any team can beat any team, but I think West Indies will be on a heavier side, because as a team they have a
home conditions with them. They have the most destructive batsmen in the squad. The bowling's been doing well. Obviously, the last game they played against England, they were not on the top, but obviously playing as one of the contender of this World Cup, I think they will back themselves to win over South Africa, win over USA, because if they will do that, the game between South Africa and West Indies will be kind of a quarter final. Yeah. So that's the more interesting context I'm looking for. So if obviously the game is coming tonight, like early morning here in Pakistan. So if that is the game won by West Indies, it will be a very interesting group stage between all these 4 teams. And you know, अगर हम USA की टीम की अभी तक की जर्नी देखें इस वर्ल्ड कप पे, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका भी नहीं रहा जर्नी अप अंटिल दिस सुपर 8. सिर्फ वो पहला गेम जो खेले थे अगेंस्ट कनाडा, वो 7 विकेट से जीते. उसके बाद पाकिस्तान वाला मैच टाई हो गया, सुपर ओवर तक गया, देन दे केम आउट ऑन टॉप इन दैट सुपर ओवर. उसके बाद USA have not won a single game. So 3 games, 1 got washed out, 2 of them they lost, and now they're coming into this one with just a lot of expectations. But do you think a team like USA will be taking that pressure, because unke paas they don't have much to lose? What will be the approach of the USA team coming into this match, especially their key players who have performed, like Netrawalkar and Aaron Jones and all of those big players who have made an impact? मेरे ख्याल से वो अपने कैप्टन को ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि जिस तरह उनकी मनांग पटेल की जो फॉर्म थी और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज या स्पेशली फर्स्ट 2 गेम्स में वो अमेजिंग थी. और बाद को जब आपका लीडर नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और वो लीडर भी इनफॉर्म जब होते हैं, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा मिस करेंगे. लेकिन देखिए US के लिए पहले भी लूज़ करने के लिए कुछ नहीं था, अभी भी लूज़ करने के लिए कुछ नहीं. और जिस तरह लास्ट वो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेले हैं, तो मेरे ख्याल से उनके पास पूरा स्पार्क है कि वो वेस्ट इंडीज़ को हरा सकते हैं. लेकिन टफ़ जॉब होगा उनके लिए, टफ़ आस्क है उनके लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ चाहेगी कि वो मैच ना सिर्फ जीते बल्कि अच्छे मार्जिन से भी जीते. और वो टीम वेस्ट इंडीज़ चाहेगी कि वो कोई ऐसी एक विन पोस्ट करें जिससे उनका नेट रन रेट भी अच्छा हो, क्योंकि उनका जो अगला मैच होना है वो साउथ अफ्रीका के लिए. ठीक है, साउथ अफ्रीका इस वक्त मैच जीत के जा रही है, लेकिन इस मैच पे बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो जो उनका, जैसे अभी हफीज़ भाई ने कहा कि वो मैच उनका क्वार्टर फाइनल होगा. तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ चाहेगी कि वो अच्छा नेट रन रेट से मैच जीते, और US चाहेगी कि वो किसी ना किसी तरह वो जो कह रहे हैं ना जायंट किलर हैं वो, तो वो भी चाहेंगे कि एक और ऐसा मैच खेलें जिसमें कोई एक ऐसी टीम को वो पछाड़ दें जिनसे उनका नाम और अच्छा चले. लेकिन मेरे ख्याल से उनके लिए देखें जो उन्होंने अचीव करना था उस सुपर 8 में पहुंच के उन्होंने अचीव किया. बस एक आधा मैच वो दूरी पे हैं, अगर वो कर जाते हैं तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये बहुत अमेजिंग वर्ल्ड कप होगा. बिल्कुल. एंड यू नो, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एन एक्साइटिंग मैच, बैटल ऑफ द होस्ट नेशंस. लेट्स सी व्हिच वन कम्स अप ऑन टॉप, बट अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बोथ दीज टीम्स. एंड ऑफ कोर्स अब अगर रैप अप करने से पहले, बिफोर वी रैप अप द शो, एंड ऑफ कोर्स we will of course be back tomorrow regrouping with all of the pre-match show, the buzz, the toss, the playing 11, the works of it. But we can't let you go without giving away some of the prizes like every day. For her is it is time to give out our I'm going to get my drum roll ready now. Winner perfume, she's ready. I'm ready. Go girl. In position. Give me a drum roll. Who's the winner today? It's my pleasure to announce that the winner is Awais Tariq. Congratulations, you answered that question correctly. You get yourself a beautiful all-rounder by Shoaib Malik on behalf of J. Thank you for answering that question correctly, and what a prize coming your way. बहुत मुबारक Awais Tariq आपको, and thank you so much once again for engaging with our show and for showing your support across social media, and of course following us and calling us and sending us your messages. So once again, thank you so much for keeping us going in this World Cup. Gentlemen, thank you so much for your time on Game On here once again, and thank you so much, Erin. We will be back, of course, tomorrow before the big game to bring you all of the pre-match analysis and of course the live action. So don't forget to tune into PTV Sports tomorrow. This was HMR Waterfront presents Game On here. That's it from us tonight. Good night. Take care. Allah.